Well, assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is me Mohammad Shadab Alam once again here to teach you prefer tool. Alright, what is prefer? Prefer means तरजीह देना, किसी को फोकियत देना, अहमियत देना. Okay, if you use in sentence, normally अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही है आजकल. ओके, तो इसको हाउ टू यूज़ दैट, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे. देखिए, प्रीफर एक वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब को आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो एज अ वर्ब की पोजीशन में इस्तेमाल करेंगे. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करें कि भाई मैं तुम्हें बहुत तरजीह देता हूँ, आई प्रीफर यू, ठीक है, वेरी मच. वो मुझे तरजीह देता है, ही प्रीफर्स मी, ठीक है, इस तरह से जुमला बनेगा. लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्रीफर छेव, प्रीफर छेव. राइट, देन हाउ टू यूज़ डबल वर्ब. एक्चुअली वी डोंट यूज़ डबल वर्ब इन अ सेंटेंस. जब भी हम दो वर्ब एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे वाले वर्ब को हमें या तो नाउन बनाना होता है, ठीक है. और नाउन बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ज्यूरेंट बनाएंगे या फिर इसको इन्फिनेटिव की शक्ल देंगे, ठीक है. तो प्रीफर के बाद हम इन्फिनेटिव लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रीफर्स एंड देन इन्फिनेटिव. ओके, and then object you can use. So I, we, you, they, plural noun we use prefer, and a part of this with he, she, it, and singular noun, any name. Okay, like Anis Ansari. Okay, one of my student, I like him very much, and he's the manager nowadays, mashallah, of Multiform. So yeah, so any singular name we use here. Prefers to, alright, then we use s और es के इजाफा जो हम करते हैं तो वहाँ पे हम s लगाएंगे, prefers to, ठीक है. And then you can use any verb. So this is the criteria. Now let me give you some sentences so that you understand more better. Okay, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए, and then you become able to make more sentences. Well, so these are the sentences. See here. Well, I prefer to go to picnic. I prefer to talk to my father rather than my mother. Sometimes I prefer to talk to my mother rather than my father. Well, and Mr. Ali prefers to study English. Okay, Miss Shabana prefers to speak Arabic, and my wife prefers to talk to me. And my wife prefers to cook biryani, beef, because I like it. And Miss Fatima prefers to deal people with the grade ebb. I would say that. And she also prefers to celebrate custom with the grade ebb. Mr. Basit prefers to operate computer. Okay, Mr. Khalid prefers to repair cellulars. Okay, Mr. Shazil prefers to recite Holy Quran. Okay. And if I say that your brother, अच्छा, ये normally people they make mistake that your brother, वो yo की जगह you को समझते हैं कि यहाँ पे s नहीं लगेगा. Okay, ये like your brother prefer to कह देते हैं. So this is wrong. Your brother prefers to होगा, and then your brother prefer to go or whatever. ठीक है, तो इस तरीके से होगा. तो I hope कि आपको बात समझ में आ गई होगी. We have studied here prefer to today. Now what is your assignment to do? And that यूज़ दिस सेंटेंसेस, इसको जुमले में यूज़ करें. अच्छा, विथ टू और विदाउट टू दोनों में आपने यूज़ करना है. लाइक आई प्रीफर हिम, ही प्रीफर्स मी, आई प्रीफर माई डैडी. ओके, आई प्रीफर माई मदर, आई प्रीफर माई फ्रेंड्स, माई फैंस, माई स्टूडेंट्स, एंड माई स्टूडेंट्स प्रीफर मी. ये तो विदाउट टू हो गया. विथ टू भी फिर आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है. लाइक आई प्रीफर टू गो, जैसा मैंने बता चुका हूँ.